तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। All right. So first of all, let's understand what is nebular hypothesis. ये एक पुरानी theory है. This is an old theory through which we will understand how these planets were formed. All right. So first of all, let's understand how this theory came up. So this theory was given by Immanuel Kant. It was revised by Laplace. ठीक है, ये इमैनुअल कांत के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी. मैं लैपलास ने इसको रिफ्रेश किया था, अपडेट किया था इस थ्योरी को, और बाद में भी इसको कई लोगों ने अपडेट करने की कोशिश की थी. जैसे चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा था कि ये एक वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what is in this theory. हम ये समझते हैं कि इस थ्योरी में है क्या. So what is being understood is there was a cloud, nebular cloud around the sun. sun के चारों तरफ nebular clouds थे, and they were rotating and revolving. These clouds, they were rotating and they were revolving around the sun. All right, and while revolving they started condensing. वो condense होने शुरू हो गए. And there is one thing which is known as accretion. Through this process of accretion, what started happening was, now these clouds which were made up of hydrogen, helium and dust particles, ये तीन चीजों से क्लाउड बने हुए थे. These clouds were made up of hydrogen, helium and dust, and as they were revolving around the sun, they started condensing, and these dust particles, when I say they started accreting, that means वो इकट्ठे होने शुरू हो गए. They started becoming clumps. And obviously when anything will revolve, जब कोई चीज revolve करेगी, it will take the shape of a disk. वो एक डिस्क का शेप ले लेगी. And eventually what started happening was, based on their densities, you guys can see that slowly the differentiation started happening. ये अलग अलग होने शुरू हो गए. And after many years these dust particles finally became planets, और इस तरीके से ये planets बन जाते हैं. But one more important thing over here is, not all planets are solid. The inner terrestrial planets are solids, और जो बाहर के planets हैं वो gaseous form में हैं. So then on what basis this differentiation has happened, this we'll look into later in this chapter. इसी chapter में हम आगे समझेंगे कि कुछ planets तो solid बन गए हैं, वही कुछ आज भी gaseous state में हैं. Why this is, we'll look into later on. I hope this nebular hypothesis is clear to all of you. Later on, one modern theory came, that is the Big Bang theory, or you can say expanding universe hypothesis, यानी universe का continuous expansion होना. So what this Big Bang theory is all about, let's have a look. So this theory was given by Edwin Hubble in around 1920. Before I get into the technical details of Big Bang theory, इससे पहले मैं technical details में जाऊं, मैं आप लोगों को एक example देना चाहता हूं. Let me give you guys an example. Imagine you have a balloon and let's say you have drawn galaxies on them. Imagine these drawings represent galaxies. Imagine these are galaxies. Now when you will inflate this balloon, जब आप इस balloon को फुलाएंगे, then what will happen is the distance between these galaxies will increase. इन galaxies के बीच का distance increase होगा. And somewhat this relates to the Big Bang theory. ये कुछ हद तक बिग बैंग थ्योरी से रिलेट करता है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि गैलेक्सीज के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग. But there is a drawback with this experiment. इस experiment के साथ एक drawback भी है. And that drawback is, when we are trying to expand the balloon, it is not just the gap between these galaxies which is increasing, but also the size of galaxies. मतलब अगर यहाँ पर galaxy 2 सेंटीमीटर की है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर डायमीटर की है, तो यहाँ पर galaxy का size भी increase हो रहा है. That means it is not just the gap between the galaxies, but also the size of galaxy itself is increasing, which is wrong. Reality में ऐसा नहीं होता है. Gap between the galaxies is increasing, but the galaxies themselves are not increasing. मतलब अगर मैं सन की बात करूं और अर्थ, मार्स, let's say I'm giving you guys an example of these planets.
So overall the universe is expanding, but the gap between these planets are not expanding at the same rate. ये उसी दर से ये planets के बीच का gap नहीं increase हो रहा है. Hope this makes sense. So this shows us what this Big Bang theory is all about. So initially there was a singular atom, and later on what happened, there was a violent expansion explosion. एक explosion होता है almost 13.7 billion years ago. And based on that expansion what happens is, after first 3 minutes, पहले 3 मिनट में one atom is being formed, एक atom बन जाता है. And then after 300,000 years later, 300,000 साल के बाद, the temperature of this universe reduces to around 4500 Kelvin, and then the universe starts becoming transparent. अभी इतनी dust और बिल्कुल ये explosion का बहुत ज्यादा impact था. In the third stage, the temperature comes down to 4500 Kelvin, and the universe starts becoming transparent. And then later on, these galaxies were formed. Hope this makes sense. You guys can look at this with one more example, that first there was a singular atom of very less volume but infinitely high temperature and pressure. एक बहुत छोटा सा एक वॉल्यूम पर एक यहां पर एक एटम था. देयर वाज अ सिंगुलर एटम बॉडी, टाइनी बॉल ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी. एंड वंस दिस बिग एक्सप्लोजन हैपेंड, उसके कुछ सेकंड्स में ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फर्स्ट एटम विद इन द फर्स्ट 3 minutes was formed. और फिर धीरे धीरे, as you guys can see this cycle, and this is where we are right now in the present time. Hope this makes sense to all of you. वहां पर मैंने आपको 13.7 billions बताया था. Here it is written 13.8 billion. This is somewhat approximate. In some books you guys will find 13.7 billion as is written in your NCERT class 11 book, and 13.8 billion from this source what I have taken. All right. Now let us quickly have a differentiation between terrestrial and Jovian planets. ये terrestrial and Jovian planets के बीच के difference को हम देखते हैं. Now as you guys, all of you must be knowing that earlier we had 9 planets and now we have 8 planets. Pluto is now considered as a dwarf planet. ये जो asteroid belt के पहले ये जो आपको Mercury, Venus, Earth और Mars दिखते हैं, these are the terrestrial planets because they have a place where you can put your foot. ये सॉलिड फॉर्म में है. एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद की अगर मैं इन प्लैनेट्स की बात करूं, अगर मैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की बात करूं, दीज आर इन गैसियस स्टेट. ऑलराइट, दीज आर इन गैसियस फॉर्म. सो व्हाट कुड हैव मेड दिस डिफरेंस? ये डिफरेंस आया कैसे होगा? वेल, द बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट these planets what are near the sun, ये जो planet सूरज के पास है, now from the sun there were solar flares or you guys can say solar winds, and because of these solar winds यहां पर जो भी gases थी वो उड़ गई थी. they blew away. The gases on the terrestrial planets, the initial gases what were present, that blew away, but which has not been the case in the outside planets. बाहर के जो planets हैं इन पर solar winds का उतना जल्दी असर नहीं करता है, ये बहुत दूर है सूरज से, and that is why here they are still present in the gaseous form. Moreover, if you look at the terrestrial planets, they are not very big objects compared to the Jovian planets which are outside. ये बहुत छोटे छोटे planets हैं, और अगर ये छोटे हैं, because of that the gravity does not have much impact. Over here the gravity does not have much impact. Over here the gravity is much more having an impact on these gases. And as a result here the gases receded away. यहां पर gases इनकी उड़ गई थी, and then they solidified. ये solidify हो गए थे as a result of the continuous revolution around the sun. Whereas यहाँ पर जो भी इनकी gases present है, इनके अंदर की gravity उस gases को जाने ही नहीं दे रही है. It is not easily possible for the gases present on these planets to recede away, क्योंकि solar winds का भी उतना present impact नहीं है, and moreover because of the giant size of these planets. Hope this makes sense. Now what is this big splat theory all about? ये big splat theory क्या है? It is related to moon. moon कैसे बनता है वो हम big splat theory में समझेंगे. अब ये theory ये कहती है कि
एक मार्स के अराउंड साइज का एक ऑब्जेक्ट आकर अर्थ से टकरा गया था बहुत सालों पहले, अराउंड यू कैन से 400 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड दिस वाज अ बिग स्प्लैट, और इसमें कुछ पार्ट अर्थ का ऐसे बाहर उड़ गया होगा, एंड देयर मस्ट हैव बीन अ ग्रेट डिप्रेशन ऑल्सो कॉज्ड इन दी अर्थ। अब इससे क्या हुआ, जब ये आकर धरती पर एक ये बहुत बड़ा सा एक मार्स जैसा ऑब्जेक्ट टकराता है, इट टेक्स अवे अ पार्ट ऑफ द अर्थ, और यही जो डस्ट पार्टिकल्स थे, दी स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। दिस इज अर्थ, रिमेंबर दिस इज नॉट सन। रिवॉल्व करते 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 क्या हुआ, इट स्टार्टेड इट स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग, और ये डस्ट पार्टिकल्स डिस्क की शेप लेने लग गए, एंड देन इट बिकेम फाइनली मून, which is our present day moon, and this is our earth. Hope this makes sense, this big splat theory. इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं तो यही जो मार्स के अराउंड साइज का ऑब्जेक्ट अर्थ से आकर टकराया था, इसको उन्होंने थिया नाम दे दिया था। दिस हैड एन इम्पैक्ट एंड दिस डेब्रिस वाज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड देन लेटर ऑन ऑल ऑफ देम दे receded, contracted together, and then they found the present day moon. Hope this makes sense. All right. हम अगर अपनी धरती की बात करें, if I talk about our earth, initially it was in the gaseous state. Then how the lithosphere has been formed, how this would have happened, let's have a look. All right. Before I get into that, let me give you guys an example. Let's say this is a bucket of water, and beneath, if you see, there's some sand present over there. Now if I will try to rotate this water, अगर मैं इस पानी को गोल गोल घुमाने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा कि ये जो सैंड है ये सेंटर में आ जाएगी, बिकॉज सैंड हैज मोर डेंसिटी, द सैंड विल कम इन द सेंटर ऑफ दिस रोटेटिंग वाटर, एंड द लाइट ऑब्जेक्ट्स विल कम टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ दिस रोटेटिंग वाटर। मतलब मैं इस पानी को गोल घुमाऊंगा तो ये जो रेत है, ये जो सैंड है, ये सेंटर में गोल गोल घूमने लग जाएगी, और लाइटर एलिमेंट्स चारों कोनों में गोल गोल घूमने शुरू हो जाएंगे। इफ यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस एक्सपेरिमेंट, then it will be easy for you to understand. हमारी ये जो धरती है, when it was revolving around the sun, all right, so then what happened was, based on the density, this process is known as differentiation. Based on this differentiation, जो heavy metals थे वो अंदर की ओर concentrate होने लगे, the heavier metals started concentrating outside, and the lighter metals came onto the surface. Because of this, as we go deeper towards the center of the earth, the density increases. This in the later chapter also we'll understand through what experiments we came to know that the density increases. हम आगे वाले चैप्टर्स में भी ये समझेंगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। अभी के लिए उस एक्सपेरिमेंट से आप ये समझ लें कि ऊपर की ओर लाइटर एलिमेंट्स होंगे, और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे उसकी डेंसिटी और हेवीनेस बढ़ती जाएगी। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फियर। सो देन हाउ द प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर एंड दिस हाइड्रोस्फियर केम इनटू एग्जिस्टेंस, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। All right. So initially what happened, as I told you, that for the terrestrial planets, यानी कि Mercury, Venus, Earth, Mars, these were near to the sun. और ये जो इनकी जो इनिशियल गैसेस जो धरती के अंदर से निकलती थी, these initial gases what were present over there, due to the solar flares, due to the solar winds, these blew off. ये उड़ जाती हैं सोलर विंड्स के कारण। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, नाउ एज द अर्थ इज रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो रहा है, अर्थ के अंदर जो जो हाई डेंसिटी के मेटल्स पड़े हुए हैं, दे आर लूजिंग द टेम्परेचर, एंड थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस, थ्रू दीज गैसेस व्हाट आर रिसीडिंग, नाउ दिस इज द डीगैसिंग व्हाट इज हैपनिंग। और ये जो डीगैसिंग, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अंदर की कई गैसेस बाहर आती हैं। द गैसेस फ्रॉम बीनीथ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कमिंग आउट, दे आर फॉर्मिंग लार्ज क्लाउड्स, and as a result heavy rains for many years continuously happened. और जो भी डिप्रेशन थे अर्थ में, जो अर्थ का हमने बिग स्प्लैट देखा, whatever depressions or big holes were present in the earth, that got filled up with the oceans. Hope this point is understood to all of you, that through the process of degassing which happened from beneath the earth, the atmosphere came into existence, and because of this continuous rain which poured these depressions, the present day oceans were formed. And this is the step number 2.
And if I talk about the present atmosphere, so later on what happened, first of all, as the oceans were formed, जैसे पहले oceans बन गए थे, there the aquatic life started. And as the aquatic life was started, they started giving oxygen through this process of photosynthesis. If you do not know what is photosynthesis, you can simply Google. You will understand the simple process in which the plants make their own food in the presence of carbon dioxide and water, in the presence of sunlight and chlorophyll, these green substances. And they will produce their food in the form of glucose, and oxygen will be the byproduct. ये oxygen बाहर निकालेंगे. Now for many years what will happen, this oxygen will remain in the water itself. ये जो ऑक्सीजन है ये पानी में ही रहेगा, मगर कभी तो ऐसा होगा जब ये ऑक्सीजन का लेवल सैचुरेशन के ऊपर चला जाएगा. The oxygen will become so much that it will actually start coming out of the oceans, और एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होने लग जाएगी. तो उस समय, दैट टाइम व्हेन द ऑक्सीजन विल नॉट जस्ट बी प्रेजेंट इन द ओशंस बट आल्सो इन द एटमॉस्फेयर, then we can say some life in the land also will start forming, and then we can say that blue algae or those elements, those atomic elements, unicellular organisms, sometimes around 3000 million years ago will be formed. Hope this makes sense to all of you. और इस तरीके से ये atmosphere, hydrosphere and all these things are formed. Now if you guys want to revise this, I would recommend go to Geography NCERT class 11. All right. So I have already explained this. So you guys can solve this question and play this video. All right. So the right answer is 1 and 2. Immanuel Kant, मैंने बताया था आपको, he gave the concept of nebular hypothesis. Edwin Hubble in 1920 he gave the concept of expanding universe hypothesis, which is also known as Big Bang theory. All right. Let's move to the second question. Please pause this video and write your answer and then you can play it. All right. So the right answer is only 1. यहां पर इन्होंने वही बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया कि पहले वो एक सिंगुलर एटम था. इनिशियली देयर वाज अ सिंगुलर एटम विद स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी. दिस इज राइट. And it was, this event happened around 4.7 billion years ago. No, I told you it happened around somewhere 13.7 billion years ago. So this statement is wrong. So only 1 is right. All right. So this is the next question. You guys can pause this video and then you can write the answer. All right. So the right answer is all are correct. The moon was formed as a result of the big splat theory. Origin of universe is given in the Big Bang theory. Evolution of Earth, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, planets कैसे formed हुए थे, through nebular hypothesis. So all are correctly matched. All right. Please pause this video and write the answer. All right. So the correct answer is only 2. अब इसमें बोल रहा है कि कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स से डिस्क शेप क्लाउड बन जाते हैं, प्लैनेट्स फॉर्म्ड होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन. दिस इज राइट. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. बट द सन वाज सराउंडेड बाय नेबुला, जो सोलर क्लाउड्स थे, नेबुला कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन. नो, हाइड्रोजन एंड हीलियम. So that is why you guys have to be extremely careful when you're reading the question. You guys have to very carefully read the question and then attempt the answer. So the answer is only 2. Hope this video was beneficial to all of you. Thank you everybody for watching. God bless you.